presentation will start his or her presentation, we will be also live stream on our social media platform. So dear and respected friend and students, thank you so much for your kind participation in today's national debate competition. We have shortlisted 25 candidates, and today we have 3 judges. Let me introduce first judge of today's session, Dr. Shashi Shekharji. He is an eminent social scientist from Delhi University. He teaches political science and he has a good understanding of politics and social reality also of Indian society and Indian politics. We have with us Dr. Arvinder Ansari. She is a professor at Jamia Millia Islamia, New Delhi. We have with us Professor Shamim. Shahid Samim, right? Sasiji? हाँ क्या करें? Professor Shahid Samim, right? Taslim. Professor Shahid Taslim. Okay, Professor okay. Shahid Taslim. So he's from Jamia Millia Islamia. Jamia. He is professor in Jamia Millia. And we have also with us Sri Vijay Rao Sahab, Chief of Task Force of Society for Communal Harmony. So as you know, we have 5 minutes limits of each presentation. First of all, each and every participant can introduce him or herself in 20 seconds. So he can say his name, affiliation, and the language of difference. So first, I would like to invite Sur Pratap Kumar. He's from Manipal University. So Sur Pratap, are you there? Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible, but you are not visible. So kindly. Sure, sir. Yes. Just give me a minute, sir. Yeah, maybe for the ease of things, just the person who's speaking can turn on their video, otherwise it might be jammed. Yes. We'll get to see all the guys, but first it will be better if they just did whoever is speaking. Because too many. So, yes. So we can see. Visible? Yes, you are visible. Please start. So shall I? So good evening, everyone. I am Surya Pratap Singh from Manipal University. And today I will be debating on the topic, can India grow and progress without communal harmony? My debate will be in English language. So I'll start. Mahatma Gandhi once said, always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at joining your thought and everything. India is a country of multi-ethnic culture where people belonging to different religion, racial, cultural, and lingual identities live together harmoniously. Communalism is the most serious threat to our sovereign, secular, socialist, and the democratic polity. The number of communal incidents is increasing day by day, which is not a good sign for a democracy. India is known for communal harmony, which has to be maintained. It is the hallmark of democracy in the country governed by the rule of law. Rule of law pervades over the entire field of administration, and every organ of the state is regulated and governed by the rule of law. It is an eternal value of constitutionalism. An inherent attribute of democracy and good governance has to be maintained. Since antiquity, all religions, cultures, and societies have provided for living in harmony. It is actually the fundamental law of creation and continues to govern our life. Etymologically, harmony means joint. It is understood as binding together and being in concord with one another and the cosmos and in the context of communities of different thoughts and beliefs, be it social, economic, political, and ecological. It simply means living with unity and mutual reciprocity beyond class, caste, creed, religion, and gender barriers. Violence erupts whenever the communal harmony is disturbed. No human being enjoys this harmony or violence. Communal harmony now is the fundamental need of every country's fabric. It is that the people of different religions, caste, creeds, and different backgrounds live together in the society with love and peace amongst them. It strives to create goodwill and harmony among various communities. The aim is to foster and coexistence rooted in or inspired by religious and cultural values.
In the context of religious harmony, a refreshing reference may be made here to a letter said to have been addressed to Emperor Aurangzeb by Chhatrapati Shivaji, where he is reported to have said, Hinduism and Islam are both beautiful manifestations of the divine spirit. The call for the prayers is given in the mosque. The bell rings to the divine glory in the temples. Anyone bearing fanaticism and religious hatred must be acting against the command of God. As we know, man was created as one by God without any caste, creed, or religion. All religions preach us to live in harmony, peace, and togetherness, and to spread out the message of love and brotherhood, and not hatred. They inculcate in us religions, tolerance, and forbearance for all religions and faith, even sacrifices when necessary. The time has now come for all mankind to live in earth in harmony as a single family. Living in harmony is no longer simply an ethnical principle, rather, it is a way of life. Mahatma Gandhi had faith in the Vedantic doctrine of unitism, which says all men are part of one universal existence. All men are essentially one member of one family. So an individual has to dedicate himself to the service of all. But sensual pleasures and personal possession act as a blinds to shut off the light of the truth of unity. He said, I am essentially a man inclined to compromise because I'm never sure that I'm right. God is truth, reality, and the law of harmony that prevails the whole universe. He further said, if love or nonviolence be not the law of a being, the whole of my universe and the whole of my argument falls apart. Love or ahimsa is, after the truth, the most significant term in Gandhian philosophy. Positive meaning of love includes affection, sympathy, mercy, harmlessness, but it is a positive state of love. Mahatma Gandhi also said, let us forget all thoughts of I am a Hindu, you a Muslim, or I am a Gujarati, you a Madrasi. Let us think I and mine in a common Indian nationality. We shall be free only when a large number of people are determined to swim or sing together. He believed in tolerance and acceptance of all religions within the Indian national framework. The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949 and came into force on January 26, 1950. That is tomorrow. It was brainchild of the Constituent Assembly, indirectly elected by the people of the country in 1946. The Constituent Assembly reflected the ethnically, religiously, and linguistically diverse group that was made of India. Dr. Ambedkar remarked in the Constituent Assembly, what does fraternity mean? Fraternity, it means a sense of common brotherhood of all Indians, of Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is for Indians to think that they are a nation. I remember the days when politically minded Indians resented the expression, the people of India. They prefer the expression, the Indian nation. I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. Pandit Govind Ballabh Pant said, I want the synthesis of cultures to go on so that we may have a state in which there are, for the achievements of this freedom, fully maintaining and observing and following the principles of equality, liberty, and fraternity. The framers of the Indian Constitution emphasized the objective of fraternity in the preamble in order to ensure both the dignity of individual and the unity of the nation. The necessity of the spirit of brotherhood among citizens was first adopted by the French Revolution, along with liberty and equality, as a foundation of the new order that it aimed to establish. The term was added by the drafting committee of the Constituent Assembly to the preamble because the committee felt that the need for fraternal concord and goodwill in India was never greater than now, and this particular aim of the new constitution should be emphasized by special mention in the preamble. Thus, preamble links fraternity with two things: A, assuring the dignity of the individual, and B, the unity and the integrity of the nation. At last, I would like to conclude that which committees have to be constituted to promote communal harmony among the members of society, which should consist of elected representatives at above mentioned level and government functionaries, including doctrines of primary health centers located in the village, as well as primary school teachers along with the members of civil society. There is also a need to teach mutual tolerance and harmony so that every citizen of the country governed by the rule of law can live in peace and harmony. With this, I rest my case. Thank you so much. Okay, thank you, Secretary. Now we have with us Priya Kumari from Raffles University, New Delhi.
Hello, good evening, sir. Am I Good audible? evening. Yes, you are audible. Please start. Yes, sir. So I would like to start my speech with a few lines. मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। Good evening, everyone. This is Priya from Raffles University, and today I want to present my views on the topic, Can India grow and progress without communal harmony? So I would like to start with, as we all know, India is a land of diverse religions, and it has set an example of unity in diversity as people of different castes and religions live in harmony in the country. However, this harmony is disturbed many a times by different religious groups and communities. India is a multi-religious and multilingual land. Different festivals, be it Holi, Diwali, Eid, and Christmas, they all are celebrated with equal zeal. However, even as the Constitution of India, it enforces laws to maintain communal harmony, and the Government of India, it takes strong measures to ensure the same. There have been several instances in the past that have disrupted the peace in the name of religion, be it the Parsi Muslim riot of 1851, Nagpur riot of 1927, Gujarat riots of 1969-2002, Hyderabad riot of 1990, and Muzaffarnagar riot in 2013, and so on many. And these are some of the instances of communal riots that caused mass destructions in the country, and it created major panic among the citizens. So what is communal harmony? Communal harmony is the amity between the religious communities in the country, and lack of friction and tension among them. It is known as communal harmony. In countries like India, it is an important precondition to internal peace, which is essential for the progress and development of country. Now, I would like to suggest some of the main reasons that why communal harmony is the key to any nation's progress. The first one, communal disputes, they threaten the secularization of the nation, upon which the base of the Constitution of India rests and functions. So communal harmony is the necessary to bring round the secularity of a country. The second one, communal harmony, it promotes social harmony. It strengthens the social bond between communities by enforcing the peace, livelihood, brotherhood, and tolerance among the citizens. The third one, communalism creates an atmosphere of instability within the country, making the our society weak. Communal harmony, it helps in maintaining the stability of the nation. Communal harmony unites our nation and makes it as a single entity. It has rightly been said, a nation which remains properly integrated will always be on the path of development and prosperity. Communal harmony, it promotes feeling of loyalty and fraternity towards the nation. It aids to make the people join hands and stand in solidarity for their advancement of the country. Communal conflict, it weakens the economic structure of the country. Frequent violences, they cast a huge violence in the economy. And communal harmony, it works to bring about economic growth of the nation. Communal dispute, they impact our India's foreign policies and trade negotiations too. Communal harmony, it brings about stability in nation, and it works to undo the negative impact of communal disputes. Communal violence, it is committed with the aim to conceal their own incompetence with harmony and would not let happen, since it seeks a country well bonded and strong. Communal harmony, it ensures that every citizen
gets equal treatment helps build their tolerance among the citizens. It is well known fact that a country which has less internal conflict will always prosper. To last but not the least, communal harmony, it is necessary for our India, and the drafters of constitution, they saw the India's religious diversity not as its weakness but as its strength and an integral part of its ethos. Hence, communal harmony day or Sadbhavna Divas, it is celebrated every year on 20th August to promote this belief. So at last, I would like to finish my speech or my debate with a few lines. ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। Thank you. So we have next participant, Avas Kumar Pandey from Delhi University, Satyavati College. I request respected participant to please unmute yourself, and also while presentation, kindly open your camera also. Yes, Avas. क्या मैं ठीक पढ़ सकता हूँ सर? Just बिल्कुल। विषय, क्या सांप्रदायिक सद्भाव के बिना भारत उन्नति और विकास कर सकता है? महोदय, इस विषय में निहित दो शब्द सांप्रदायिक एवं सद्भाव। सांप्रदायिक का तात्पर्य संप्रदाय से है एवं सद्भाव का तात्पर्य शुभ भाव समझौता से है। महोदय, एक संयुक्त परिवार होता है, वहां पर भी कुछ लोग अच्छे मनोभाव के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा पल आता है जहां बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनके विचारों में द्वंद्व दिखाई देने लगता है। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव को समझने से पहले हमें यह समझना होगा सांप्रदायिक के साथ सद्भाव क्यों जोड़ा गया है। सांप्रदायिकता, क्या जो विभिन्न संप्रदाय हमारे देश में मौजूद हैं, क्या उनके द्वारा हमारे भारत देश के विकास को खतरा है? क्या सांप्रदायिकता भारत में जहर घोलने का काम कर रही है? तो महोदय, सबसे पहले मैं सांप्रदायिकता की परिभाषा से शुरू करना चाहूंगा। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों के प्रति एक पूर्वाग्रह पर उनके अंतर को बताती है। यह पूरी तरह से धर्म, विश्वास एवं जातीयता आदि पर निर्भर है। महोदय, यह एक शब्द में अगर मैं कहूं तो एक व्यक्ति एवं उसका एक विशेष समुदाय से लगाव। महोदय, हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक तो एक नकारात्मक। महोदय, सांप्रदायिकता के भी दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक तो एक नकारात्मक। जहां सकारात्मक पक्ष इसके एक व्यक्ति द्वारा उसके समुदाय के प्रति आर्थिक एवं सामाजिक प्रयास को दिखाती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वहीं दूसरी ओर नकारात्मक पक्ष भारतीय जनमानस के बीच विष घोलने का काम करती है, उनको वैचारिक स्तर पर कुपोषित करती है, एक संप्रदाय के प्रति दूसरे संप्रदाय के परोपकार के प्रति, उनके भलाई के प्रति। महोदय, यह परमार्थ के प्रति स्वार्थ पर बल देता है, परमार्थ के बजाय स्वार्थ पर बल देता है। यह समाज में विष घोलने का काम करता है। महोदय, इतिहास में और वर्तमान में कुछ ऐसे दंगे हो रहे हैं, हुए हैं जो भारत के भविष्य में, भारत के विकास के पथ पर भविष्य में भी दूरगामी परिणाम, बुरे दूरगामी परिणामों को दिखाते हैं। जैसे 1961 में जबलपुर दंगा, राउरकेला का दंगा, जमशेदपुर का दंगा, एवं 1984 में सिख विरोधी दंगा, 2002 में गुजरात दंगा, 1992 में बाबरी मस्जिद जन्मभूमि दंगा एवं शाहबानो विवाद, तथा 2020 में हाल में हुए दिल्ली में हुए कई सांप्रदायिक दंगों ने धर्मों के बीच एक गहरी खाई खोदने का काम किया है। महोदय, यह भारत देश है, यहाँ विविधता में एकता के मंत्र पर काम किया जाता है। विविधता में एकता जो यहाँ की सामाजिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। ऐसे भारत देश में सांप्रदायिकता के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ते देख मेरा मन खिन्न उठता है। महोदय, यह सांप्रदायिकता का बीज जो बोया जा रहा है, यह औरंगजेब के जमाने से बोया जा रहा है। औरंगजेब ने इसकी शुरुआत की थी। महोदय, उसके पहले अकबर और कई ऐसे राजा हुए हैं जो सहिष्णु प्रवृत्ति के थे, लेकिन महोदय ये औरंगजेब असहिष्णु प्रवृत्ति का था एवं इसने कई ऐसे कर लगाए, कई ऐसी
कुछ चीजें की जिससे यह संप्रदाय पनपा, यह सांप्रदायिकता पनपी, सांप्रदायिकता का नकारात्मक प्रभाव पनपा। महोदय, आज भारत देश में जरूरत है सांप्रदायिक सद्भाव की। जैसे वैश्विक ग्राम की बात आजकल हो रही है, उसी प्रकार से एक बीच वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही थी। महोदय, एक सूक्ष्म धरातल पर देखा जाए तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, सबको जोड़ना। महोदय, इस भारत सरकार के द्वारा भी कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव की वृद्धि को दिखाते हैं। महोदय, 20 अगस्त को सांप्रदायिक सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई और कदम उठाने की जरूरत है। जैसे बिना भेदभाव के युवाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, वो भी जो सद्भाव मेलजोल पर आधारित हो। महोदय, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ काम कर रही हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। हिंसा एवं दंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। महोदय, इतना ही नहीं, कई ऐसे मैं गिना सकता हूं आपको जो बहुत बुरे परिणाम हुए हैं और भारत देश की प्रगति पथ पर बहुत बाधाकारी तत्व के रूप में उभरे हैं। महोदय, मैं जानता हूं कि मैं ये जो चीजें कह रहा हूं ये मुझे कल को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसे कई नागरिक हैं जो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। एवं महोदय, आवश्यकता इस बात की है केवल सामूहिक प्रयास की, केवल सामूहिक सहयोग की। जब तक देश के नागरिकों में नागरिकता का बोध लाए बिना नागरिकता बोध नहीं आएगा, तब तक भारत देश प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। जरूरत है साथ बढ़कर आगे बढ़ने की, संप्रदाय के प्रति अच्छी शिक्षा लेने की, उसके बारे में सही से जानने की जिज्ञासा की। जिस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार से जरूरत है सामूहिक विचार मंथन से सांप्रदायिक सद्भाव नामक अमृत को निकाल पाने की। महोदय, इस आभासी मंच पर मैं केवल एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं कि जब उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं खुद को जात पात, ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने वाले। धन्यवाद महोदय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आभास। अब हम सनीश कुमार को बुलाना चाहते हैं। सनीश कुमार सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग से हैं। Sir, am I audible? जी, आप ऑडिबल। Okay. Jai Hind. Today, I, Sanish Kumar, student of Satyavati College, University of Delhi, would like to bring lights upon, can India grow without communal harmony? There was a famous quote that a house divided against itself cannot stand together. And also, we all have visit many of the gardens. A single plant of rose cannot build a whole garden, or a single plant of tulip or any other can't grow a whole garden. When we talk about our personal identity, before I want to take to the community, let's talk about personality. Howard Gardner talked about multiple intelligence of all of us. Many of us are different in different things. As the same, a community is made of different type of peoples following different community, different cultures, and many things. And India's, talking about our nation, India's cultural civilization of India has been started in 12,000 years ago. Divided rule and policy of British, which led to British acquiring India for its almost 100 years under colonization. British came, and all it was that India has a different kind of people, and they only occupied divide and rule policy, which led to the massive results, and which country is suffering till now. The resources among the countries were lost. Many of the people lost their lives, and many things were suffered by them. If we talk about communal harmony in India, we need to establish, because we have seen many drastic results where it has led not to be followed. If we talk about partition, it was all because of two major communities residing in India during the independent time, which lead to partition of India, East Pakistan and West Pakistan, which leads to many of the issues. And till now, the stretching between the two nations, the Pakistan and India, which led to many of the issues, POK, and there are many organizations suffering due to it. Terrorism, it's also due to, and most of the time, it has been seen that communal harmony has been affected most in the cases of
India because of having different community speaking different languages, dividing states in terms of languages, peoples around the nations, and has been led to the partition of also of the states. When Ministry of Home Affairs, I would like to read their statement where it has put up what in case of any communal guidelines or what any rights takes in against communal harmony. If any, they clearly states in any rights of communal harmony, state's prime responsibility of a state government is to protect the people of affected areas and prone the community rights. Even the government believe that we the people are as an individual, but as a whole we represent a community. We can't say whether if international organization, we are not represented by any of the community in India. We are not represented by any of the religion following, any of the practices following in India. We're all represented as one nation, one people. And we the people are self-responsible. Government always talk about precaution, about immediate, it can follows, but precaution is in our hand. There are many issues. I would like to bring upon one thing. There was riots happening in anti-Sikh camping in Mumbai, Gujarat. Gujarat. I'm sorry, sorry for interruption. No question, please. You will not raise any question during his, his speech. Please, no question is allowed. Please go ahead. Okay, thank you, sir. Anti-Sikh campaigns, Mumbai and Gujarat partition, and Telangana and Andhra Pradesh partition. Media being, yes, I would like to say one thing because I strongly oppose that communal harmony. Sorry, I strongly oppose that, yes, if communal rights are there, then harmony cannot be established. Media, I would like to say media plays an important role. Whenever our elections are there in our nation, we always see that media playing a role, that certain community is there in a certain section of the state or certain religion, mainly in the states of Uttar Pradesh, Bihar, and northeastern sides. Posing of judgment of love jihads. I would like to say that due to some sections of the society, the government has made it in most of the state. Recently, we heard of term love jihad, where it was of two religions of India, Muslim and Hinduism, which led to many of the results. If we talk about, we should see it as a community. Seeing it on an international level, Civil War of America, French Revolution, Israel-Palestine problem is the reason of what that's going in around the world and which all of us have suffered. Yes, we the people are responsible. If we talk about Muslim forms human chain in the front of temple during Bangalore violence, Sikhs sanitize a Jama Masjid during the time of Eid, and CEA protest bill was going in Delhi, people formed a chain to protect the people of Islam religion, where they were offering namaz. Solution, as we all know, we talk about that the younger generation, the upcoming generation is the future of the nation. So the first thing is, of course, yes, everything can be taken as a root level solution. We can talk about different sections of the society. We can talk the different schools, communities to teach these young students that yes, we all are one. We all built as a one. When we were independent, we all were asked, as independent, we all are individual, but yes, together we are one. With this, I would like to say that yes, United Liberation Front of Assam establishing some barriers are there I would like to say some barriers are there, like United Liberation Front of Assam establishing separate state of Assam for indigenous Assamese people, RSS, and there are many certain sections of the society which should be banned. Even government has banned some of them, which majorly was United Liberation Front of Assam, promoting social movements like campaigns by schools teaching the young generations on how to promote different cultures as a one. With this, I rest up my case. Thank you and Jai Hind. Thank you. Now may I like to invite
Dipali Vist from Satyavati College, Delhi. Dipali Vist, are you there? Suryakshi Jha from Satyavati College. Yes, sir. Yes, please start your presentation and also start your video. Yes. Okay, sir. So once again. Start. Good afternoon, everybody. My name is Suyanshi Jha. I am from Satyavati College, University of Delhi. And today I would be speaking in favor of the motion, can India grow and prosper without communal harmony? Communal harmony is the principle of peace and harmony existing amongst various religious communities free from violence and hatred. Maintenance of communal harmony hasn't been easy for India. India has seen several riots and witnessed several conflicts between the religious communities, and it is the tolerance and acceptance of each other's belief so that non-violence prevails. India is a diverse country, home to many religions. People in India can practice and profess the religion they want. All the citizens have the right to follow their own religion, and this is what shows our unity and our unique unity in diversity. India is the country of multi-ethnic groups, racial, cultural, races, and language and community, etc. Communal harmony is the hallmark of democracy in a country like India, which is run by the rule of law. There's hardly any other country in the world than India which has such a variety and ethnic groups, such a variety of culture, traditions, communities, languages, etc. Communal harmony promotes feeling of loyalty and fraternity towards the people, towards their nation, and it ensures that every religion gets equal treatment among all the communities. People belonging to various ethnic groups, races, religion, creeds, cultures have come and settled on this land and have been living on this land happily and have loved this land. The parliament or the preamble of a constitution states India is a secular country. It gives its citizens the freedom to practice any religion of their own choice. People belonging to different caste and creed have lived here to understand each other's cultural and social beliefs, have lived on same platform and have respected it, which fosters the mutual trust and harmony of the people. Harmony indicates that there is love and affection between the people of India. The Indian Constitution supports and encourages this communal and religious harmony. As we know that man was created as one by God. It is the human, it is us that we divided it. We divided into caste, into communities, into traditions, into culture, and into communities. There's a famous saying by Mahatma Gandhi that let us all forget that I am a Hindu, you are a Muslim, I am a Gujarati, or you are a Madrasi. We can only live together. We can only live together only if we are determined to swim and sink together. Indians have been living on this land for centuries and since ages and want to live together amicably. But unfortunately, there are certain elements in the society who don't want this. There's a saying that one fish spoils the whole pond, and these are the certain unsocial elements found in every community that sadly exist, and they don't want to do so. We as Indians are known to the world for our togetherness and our brotherhood, our peace, and our communities, our unique unity in diversity. We live in a country where we can survive merrily if we have the tolerance and respect for each other's belief, culture, and traditions. And communal harmony plays a very crucial aspect in Indians' constitution and to Indians. It is a pride to India because even after seeing a lot of clashes and conflicts, since ages, we have lived together here. The existence of acceptance and tolerance is very important. It is very necessary. And the reaction of a common man to fake news and false propaganda plays a very pivotal role in disturbing the maintenance of communal harmony. Hence, it is very important, and hence it is a high time that we should know the significance of communal harmony and the importance of communal harmony and the consequences of destroying it. Thank you. Thank you, Suryakshi. Now, Tejaswini Singh from Ramjas College.
Tejaswini, are you there? She's taking some time. So Shruti Chaudhary from Satyavati College. She's taking some time. So Khushija from Hindu College. Yes, sir. Yes, please start your presentation. नमस्कार, मेरा नाम खुशी झा है और मैं हिंदू महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का विषय है कैन इंडिया प्रोग्रेस एंड ग्रो विदाउट कम्युनल हार्मनी, यानी क्या सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक एकता के बिना भारत आगे बढ़ सकता है। मेरे मत में इसका सीधा साफ उत्तर है नहीं। बिना एकता के, बिना शांति के भारत तो क्या दुनिया का कोई भी देश विकास की राह पर नहीं चलना चाहता। मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि विषय में कम्युनल शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत समाज की छोटी से छोटी चीजें खुद ही आ जाती हैं, जैसे समाज के रीति रिवाज, सभ्यता, आर्थिक स्थिति, सांप्रदायिकता, धर्म, जाति और ना जाने क्या क्या। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हार्मनी की बात करते समय हमें केवल धार्मिक मुद्दों पर बात करना चाहिए? जी नहीं। अपनी इस बात को और पुख्ता तरीके से रखने के लिए मैं सबको बेल्जियम का केस याद दिलाना चाहूंगी। मैं सभी को श्रीलंका का वो केस याद दिलाना चाहूंगी जहां केवल भाषाओं के आधार पर एक सिविल वॉर की स्थिति आ खड़ी हो गई थी। महोदय, अब ये भी सही बात है कि जब बर्तन साथ रहेंगे तब वे खटकेंगे ही, परंतु उससे आपसी बात करके एक सफलता की ओर पहुंचाना ही हम भारतीयों का काम है। यदि हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कौन रखेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कौन रखेगा? हमें गंभीरता से सुनेगा कौन? हिंदुस्तान विभिन्न जाति प्रजातियों का घर है और कई बार धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते आए हैं, जिसकी वजह से एक राज्य या एक वर्ग पीछे रह जाता है। इसमें हम कश्मीर का उदाहरण भी ले सकते हैं, जहां सामुदायिक डिफरेंसेस के चलते कश्मीर के विकास में शायद कोई रुकावट आ गई थी। महोदय, इन सब बातों से इतना तो साफ है कि देश में एकजुट ना होने से ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों में ही असर पड़ता है। जब देश में सबको एक समान लगेगा तभी वे पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे। बिना सामाजिक सद्भाव के समाधान सरल नहीं है। इसे अकेले सरकार द्वारा हल भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और जब तक आपस में विश्वास नहीं करेंगे, समस्या का हल भी नहीं होगा। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि जिन देशों में सांप्रदायिक संघर्ष कम देखने को मिले हैं, वहां पे स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा में कई बेहतर प्रदर्शन किया है। महोदय, कम शब्दों में प्रगति ही शांति है और इस प्रगति के कई पहलू होते हैं, जिसकी बात हम तसल्ली से कर चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी चीज है जिसे समाज में एकता भी रहेगी और प्रगति एवं विकास में कोई रोक टोक भी नहीं आएगी। भारत जैसे देश में धर्म विरोधी लोगों का खंडन होना चाहिए और सभी को अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगी कि यदि सोचा जाए तो इस ग्रोथ और प्रोग्रेस के बीच में दीवार जो है, सांप्रदायिक मतभेद, इसका एक कारण ये भी होता है कि मनुष्य एक दूसरे को एक दूसरे से ही अलग समझने लगता है। तो अंत एक पंक्ति के साथ करना चाहूंगी कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। धन्यवाद। Next, Malti Das from Hindu College. Hello. Yes, you are audible. Please start your camera also. Yes. Am I visible? Yes, you are visible. Okay. Good evening to one and all present here. I am Malti Devi and I am from Hindu College, second year, BA Honours Political Science. And the topic is that can India grow and progress without communal harmony? And I am going against the motion that India cannot grow and progress without communal harmony. So, and I'm going to speak in English. So, shall I start? Yes. Okay. Communalism, which has been derived from the word community,
which is not negative at all, has become a very pejorative or a negative connotation, as it is more associated with violence or conflict nowadays. Communal violence depends on a variety of factors, and it is not restricted just to religious, such as political, social, etc. And talking about India, which is now trending as the 5th largest economy of the world, is the country known for the unity in diversity. Thus, communal harmony is the precondition for its progress and development. There are various aspects of the holistic development associated with the communal harmony, such as economy, politics, culture, education, peace, stability, which we also call the pillar of the development and progress. So talking about economy, communal violence has been the root cause of the economic disparity. India holds a dismal of 72nd rank in the Global Peace Index. And according to the Global Peace Index report, the economic cost of the violence is 6% of our GDP. During communal violence, businesses shut down, curfews are declared, and markets shut down, which curtail the functioning of the economy. And moreover, long-term violence also leads to deterrence in investment and affects the property as well, which directly affects the economy. An example of the religious communalism affecting the economy could be the case of Gujarat riots, where investment flowing in the state from other states declined adversely and affecting the economy. Another aspect of the affecting the economy would be the tourism industry, as tourists feel insecure to move to this place where there is communal violence. Therefore, it would hamper the tourism industry as well. Now, talking about the second dimension is political. Political history of India shows that political stability or instability is not only dependent on the political ideology, but also the combination and influence of communal, caste, and regional elements. The period of 1980s is regarded as the most violent decades of the century. Number of caste and communal problems emerged during this period. For instance, Meenakshipuram conversion of Dalits to the Islam, the demand for Khalistan by Sikhs, in Punjab, leading to Operation Blue Star, Assam agitation, demand by Kashmiri Muslims for cessation, a series of a series of communal riots in Muradabad, Allahabad, Meerut, etc. are the examples of the communal violence. Also, the mobilization of the Hindus for construction of Ram Temple by the Vishwa Hindu Parishad at the site of Babri Masjid, resulting in the Hindu-Muslim clashes, not only in Ayodhya, but throughout the country in 1992. All these incidents adversely affected the stability of the Indian politics, and it also intensified the caste, communal, and religious factors in Indian politics. Moreover, Citizenship Amendment Act of 2019 is a striking recent example which initially started against the bill, but later on involved the religious and communal violence as well. Also, talking about another aspect is culture. The beauty of Indian culture lies in the diversity and celebration of different festivals by people of different ethnic groups and religions together, which will automatically hamper the time of communal violence due to hatred instilling in the heart of one another. Also, talking about education, communal forces have tried to poison the minds of the younger children with hatred and distrust among and about each other in the communities. Many of these children were unable to go back to school due to financial constraints and the deepening of the communal divide. For example, the Delhi riots of 2020 February. Violence of human rights and erosion of constitutional values like secularism, fraternity, etc. will damage the peace and stability of the country. Thus, in such circumstance, development and progress is not possible at all without the communal harmony. We need to adopt the development approach instead of falling prey to the communal agendas and violence of a handful of people. We must together work for making our youths employable so that we eventually contribute to our nation building action. Thank you.
Thank you. Now, may I like to invite Isha Sharma from Rajasthan. Yes, Isha. Good evening, sir. Good evening. Please start your. Yes, sir. सरहदें जो हैं दिलों में, इन्हें हटा कर तो देखो। मजहब के नाम से सियासत हटा के तो देखो, और बना लेना मंदिर मस्जिद फिर कभी। और बना लेना मंदिर मस्जिद फिर कभी। पहले नफरतों से जले हैं जो घर, इन्हें सजा कर तो देखो। A very good evening, respected judges, my worthy opponents, and all the audience. I am Isha Sharma, student of Raffles University, Nimrana, Rajasthan. The topic on which I'm going to throw light is nothing else but yes, the India cannot grow and progress without communal harmony. India is a country which is known as a highly diverse country globally. India wears various identities like different races, different languages, different religions, different customs, and different traditions, and many more. A garden looks more beautiful when it carries different colors of flowers, and India is that beautiful garden with a lot of variety. But because of this diversity, we are sometimes against each other. There are communal rights, there are communal incidents all over the countries. Our politics is fully on the basis of our religion and caste. Religion became an agenda in every political rally. That's why the need of harmony and it in diversity is needed. Communal harmony is the state of peaceful living amongst members belonging to different communities. It is the greatest need of the hour. It is the only way by which the unity and integrity of the country can be saved. There is an image about India that our minorities are not treated well and they don't get the opportunity to stand by the name of India. They don't know the India doesn't claim any religion, but every religion claims to be a part of India. There have been 15 presidents of India since the post was established when India was declared as a republic nation, and three of them were Muslim. During the during the war with Pakistan in 1971, the Indian Air Force and the northern sector was commanded by a Muslim air marshal. And when the soldiers are standing by the boundaries of India, they don't they are of no religion, no caste, no color. They are just the warriors of our nation. So it is fully a false statement, or there is no fact that we are divided in religions, uh, and God hasn't made any religion when we are born. We all are having red blood in our body, so we are just human beings apart from any religion or any identity which we are wearing. God has created us without any identity of Hindu, Muslim, Sikh, Christian, or any of the races. We have India, but India is facing many challenges in the race of communal harmony, politically, economically, and there are many factors. In this, media is turning communalist by promoting the negative sides. Media nowadays, media is just want to rise up their TRPs. They just want to show the catchy news, but and they are building opinions, not presenting the facts and figures of our nation. And the main role of media is just to promote facts and figure, which is a drawback of media. And because of that, there are many communal incidents which are happening all over the country. According to the Ministry of Home Affairs, a total of
365 communal incidents occurred in the country from 2011 to October 2015. This is an average of 58 incidents a month. 8 states like Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh accounts for 85% of the incidents. These states were ruled by various parties of different points in, in these 5 years. And there are 7 other states which are not having a single communal incident within this period of time. And these communal rights became sometimes because of the mandir and masjid debates which are just of no use. And but and this is the reason where we are not united properly as we want, as a nation needed. Great things are achieved only when we work as a group. When we work as a group, when we have harmony, when we are sharing communal harmony in our nation, then will lead to our development and will rise up our nation in many factors. Thank you so much. Yes, thank you, Isha. Now, next contestant is Vishal Kumar from Hindu College. Am I audible? Yes, you are audible. Am I visible too? Please start. आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन और आपके नेक कार्य के लिए साधुवाद। तो मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और तीसरे के मुंह से निकला आलू, और जब पोस्टमार्टम हुई तो पता चला कि तीसरा भूखा था और 2 के पेट भरे हुए। तो कहीं ना कहीं आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे सामने ये यक्ष प्रश्न है, क्या आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो पाए हैं? क्या सारे देशवासियों को आज भी रोटी नसीब हो पा रही है? अगर नहीं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारे सामने है जो कि अलग दास्तां ही बयां कर रही है। क्या है आखिर ऐसा कि आज भी हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए, आज भी सबके थाली में रोटी नहीं है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण जो मुझे नजर आता है वो है सामाजिक द्वेष। किसको चिंता पड़ी है आर्थिक सूचांकों की? किसे चिंता है कि आर्थिक स्थिति पर हम कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं? यहाँ सारे लोग धर्म के संरक्षक बने हुए हैं। 17वीं और 18वीं सदी में जब हॉब्स और लॉक जैसे चिंतक आए तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी थ्योरीज दी। उनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है जिसमें कि सारे लोग एक दूसरे से सामाजिक द्वंद्व में हैं, तो उन्होंने स्टेट जैसे एंटिटी का निर्माण किया जो कि हमें स्टेट ऑफ नेचर से बचाएंगी, सामाजिक द्वंद्व जो है उसको खत्म करेंगे। लेकिन अगर भारत के परिदृश्य में या कहीं के परिदृश्य में देखें, जब स्टेट ही विभाजन करने लगता है, जब स्टेट ही जो सोशल क्लिवेजेस हैं उसको ब्रॉडन करने लगता है, उसको बढ़ाने लगता है और उसको अपने हित में प्रयोग करने लगता है, तो ये स्थिति बहुत घातक होती है। हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। जाति, धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीजन, इन सब चीजों पर विभाजित है। लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो इनका प्रयोग करते हैं अपने हित में। वो आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे, उस गैप को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जितने भी सोशल क्लिवेजेस हैं उनको वो और ज्यादा वाइडन करते हैं ताकि वो यूज कर सके उनका, क्योंकि उनसे वोट मिलता है। अगर आप ग्रामीण परिदृश्य में जाएं, अगर आप ग्राम में जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि आप किस मुद्दे पर वोट देते हैं, तो आर्थिक मूल्यांकन बहुत कम करते हैं सरकारों का, क्योंकि जो राजनेता है वो धर्म यूज करेंगे कि आपका धर्म जो है खतरे में है। क्यों भाई, क्यों खतरे में है? ये सवाल वो नहीं पूछते।
वो उनको नहीं पता है। राजनेता जो है वो धर्म, जाति, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, और जब धर्म, जाति, इन सब चीजों का प्रयोग होगा तो आर्थिक मूल्यांकन सरकार का नहीं हो सकता है। यहीं पर कार्ल मार्क्स की बात आप अगर बात करें, रिलीजन इज ओपियम, जी हाँ, रिलीजन ओपियम है। उनकी जो परिकल्पना थी सुपर स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक बेस की, हमारी जो इकोनॉमिक बेस है उस पर सारी चीज आधारित है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इन सब चीजों का प्रयोग जो है स्टेट करता है, ताकि आपका जो ध्यान है वो मुख्य मुद्दों से, जो आर्थिक विकास है, आर्थिक बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, ये सवाल को हटाने के लिए धर्म को, जाति को, रीजन को, रिलीजन को, ये सब चीजों को गौन किया जाता है, ताकि आप मुख्य सवाल जो है, जो मेन क्वेश्चंस है, वो नहीं पूछे उनसे, उनसे आपका ध्यान भटकाया जाता है। अगर बात करें हम मीडिया की, मीडिया जो है फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उसका काम होता है सवाल पूछने का, लेकिन आज के हमारे मीडिया जो है वो अपना काम कर पा रहे हैं? विकास कब होता है, किसी देश का समृद्धि कब होता है, कब प्रॉस्पेरिटी आती है? जब लोगों में साइंटिफिक टेम्पर होता है। लेकिन आज की मीडिया पर आप देखेंगे, आप डिबेट देखिए, आप उनके प्रोग्राम्स देखिए, जो उनके जो नैरेटिव है उनको देखिए, शाम 5 बजे दंगल हो रहा है, धर्म दंगल, धर्म संसद। अब तो कुछ बाबाएं भी आ गए हैं जो कि आपसे भूत प्रेत वगैरह भगाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक टेम्पर की कमी दिखती है। अगर हम बात करें लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी, नॉन स्टेट एक्टर, उनका मुख्य रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव होता है सरकार की पॉलिसीज में। लेकिन आप अभी के परिदृश्य में देखें तो आप जो सिविल सोसाइटीज है उनको किस तरीके से एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। किसान आंदोलन, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, एक तरह से प्रेशर ग्रुप था, उसे भी धर्म के एंगल से जोड़ने की बहुत पुरजोर कोशिश की गई, उन्हें खालिस्तानी बताया गया। और भी अगर हम बात करें, जो हमारी एकेडमिया है, अगर बहुत जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज है जैसे JNU, उसको एंटी नेशनल, अर्बन नेशनल नक्सल जैसा जो टर्म है वो किस लिए यूज किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बातें की जाए, जहाँ से विकास हो सके, उन सब बातों पर बाधाएं आ रही हैं। उन सब इंस्टीट्यूशंस को, उन सब सिविल सोसाइटीज को, नॉन स्टेट एक्टर्स को कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि आज के जो समाज में, अगर हम बात करें कि किसी भी देश में अगर धार्मिक सद्भाव नहीं है तो क्या वो प्रॉस्पर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास कई उदाहरण हैं। आप बात कर ले श्रीलंका की, श्रीलंका का सिचुएशन हम सब जानते हैं, किस तरीके से वहां पे मेजोरिटेरियन रूल आने की कोशिश की गई थी एक कम्युनिटी के द्वारा, जो सिंहला कम्युनिटी थी। लेकिन आज उसका जो प्रभाव है वो हम सबके सामने है। ब्राजील, अफगानिस्तान, जहां जहां पे चरम पंथ पे धर्म पहुंचा है, वहां पे सत्यानाश हुआ है। अगर हम बात की विदेशी जो परिदृश्य है उसको छोड़े, अगर भारत की परिदृश्य के बारे में बात करें तो मुरादाबाद का दंगा 1980 का, मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का, ये सब दंगों के बाद जो वहाँ की इकोनॉमी थी, अगर बात करें मुरादाबाद की जो ब्रास का प्रोडक्शन था वो कितना ज्यादा कम हुआ, मुजफ्फरनगर में जो खेती होती थी वो कितना ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल हार्मनी होता है वो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आज आप किसी एक्टर क्योंकि वो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी मूवी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप उसके पीछे, उस फिल्म के पीछे जो रोजगार है, रोजगार रोजगार जो उसमें कितना लोगों का है, उसको भी आप प्रभावित कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कई उदाहरण हैं। कोरोना के समय में तबलीग की जमात जैसा एक टर्म यूज किया जा रहा था, उससे उससे अगर आप देखें कि किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा, तो लोग के बीच में द्वेष था, लोग एक दूसरे से खरीदारी करने में डर रहे थे। इतना जहर, इतना कटुता हमारे अंदर भर दी गई है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। अभी हम हाल ही के दिनों में कुछ दंगे देखे, जैसे करौली का दंगा हो गया, रांची का दंगा हो गया, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ से जो कटुता है वो दोनों तरफ से है, लेकिन उसको बढ़ा कौन रहा है? एक प्रवक्ता, एक पार्टी की प्रवक्ता जो है वो भाषण देती है और उनसे पूरे देश में दंगा होता है, दोनों समुदाय लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? वो किसी विशेष पार्टी का हो रहा है, वो किसी विशेष इंस्टीट्यूशन का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो साथ रहने से है। जो हमारा प्लूरलिज्म है, उस प्लूरलिज्म को और ज्यादा सेपरेट नहीं करना है, उसको कंबाइन करना है, उसको एक साथ लेकर चलना है। अगर हम बात करें 1992 के दंगे की, तो एक तरफ से मार्केट रिफॉर्म्स आ रहे थे। Am I visible?
Yes, you are visible. Was interruption actually. So, can I proceed? Yes. तो अगर हम 1992 के दंगों की बात करें, जो कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो एक पूरा नैरेटिव चलाया गया। वो मंदिर का नैरेटिव था, लेकिन उसी समय अगर देखें कि मार्केट रिफॉर्म्स आ रहा था, तो मार्केट रिफॉर्म से क्या हुआ कि इनइक्वालिटी आया। इनइक्वालिटी से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत पूंजीपतियों, कुछ चुनिंदे पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ा, और जो सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो ज्यादा बढ़ा, वायलेंस उससे ज्यादा बढ़ा। सचर कमीशन की अगर बात करें, जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं धर्म से भी रिलेटेड है। जो साचर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने कहा कि जो धार्मिक, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा पीछे हैं, और कहीं ना कहीं आज नहीं, पहले भी जितनी पूर्व की पार्टियां थी, वो इस धर्म को किसी भी तरह से वोट बैंक की तरह प्रयोग करती थी। इनका काम नहीं था कि उनका सतत विकास करे। वो जानती थी कि ये जो वोट बैंक है, वो मुझे वोट देगा। तो कहीं ना कहीं ये पहले से मानसिकता है कि जो सामाजिक, जो सोशल क्लीवेजेस है, चाहे जाति के नाम पे, वो आज इलेक्शन होता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इन चीजों के नाम पर होता है। तो अंत में इसी से कहना चाहता हूँ कि गांधी की पुण्यतिथि आ रही है। गांधी को हमने इसी सामाजिक सद्भाव के अभाव के कारण खोया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सामाजिक सद्भाव बनाना चाहिए और मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद। Thank you. Now, Aishwarya from Hindu College. मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। जी, आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रारंभ करने की अनुमति है? जी। ठीक है। बटते घर, जलती बस्तियां, किसे अच्छी लगती हैं जनाब? लहू लुहान सड़कें, रोती हस्तियां, किसे अच्छी लगती हैं जनाब? और आप कहते हैं कि ये देश करेगा तरक्की बिना सांप्रदायिक शांति के। ये फर्जी जुमले, ये झूठी दलीलें किसे अच्छी लगती हैं जनाब? बुद्धिजीवियों के सदन को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, मैं इस मत का कि भारत बिना सांप्रदायिक सौहार्द के तरक्की कर सकता है का पुरजोर विरोध करती हूँ, एवं इस विरोध को सदन पटल पर 5 तर्कों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी। परंतु इससे पूर्व मैं सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ आकर्षित करने की अभिलाषा अभिव्यक्त करती हूँ। आंकड़े वर्ल्ड बैंक के हैं महोदय। सन 1983 भारत का विकास दर 7.8% रहा। सन 1984 में यह आंकड़ा सिमट कर मात्र 3.4% रह गया महोदय। 1984, वो पंजाब के दंगे, वो दिल्ली की आग। मैं आशा करती हूँ कि सदन की स्मृति में अभी वो दृश्य जिंदा होंगे। सन 2001 महोदय, विकास दर 4.9%, जो कि पुनः 2002 में घटकर मात्र 3.6% रह गया। महोदय, विषय में 3 महत्वपूर्ण शब्द: वृद्धि, प्रगति एवं सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द से आश्रय है एक ऐसी स्थिति का जहां पर विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी प्रेम व आंतरिक विश्वास मौजूद हो, एवं जहां घृणाग्रस्त पूर्वाग्रहों का कोई स्थान ना हो। और यदि बात की जाए वृद्धि व प्रगति की महोदय, तो इनके 5 परिप्रेक्ष्य हैं, जो कि मेरे 5 तर्क भी बनेंगे। प्रथम, वित्तीय प्रगति महोदय। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यदि प्रगति अथवा विकास करना है, तो यह आवश्यक है कि वहां की डिमांड सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, लोगों के पास रोजगार हो, उत्पादन अच्छी गति पर हो, एवं कुशल श्रम की वहां प्रचुरता हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। ठीक है। अब यदि किसी देश में महोदय सांप्रदायिक, एक सेकंड, यदि किसी देश में सांप्रदायिक सौहार्द से हीन स्थिति होगी, अर्थात वहां पर भय व संगीन संदेह का माहौल होगा, अर्थात जब कुछ लोग भयवश अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अर्थात जब कुछ और लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने में अपना संपूर्ण समय लगा देंगे, तो उत्पादन कौन करेगा महोदय? और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्दहीन स्थिति कितनी जल्दी दंगों का रूप ले लेती है महोदय। तो जब सरकार के इतने संसाधन दंगाइयों को पकड़ने, आहत लोगों को राहत पहुंचाने एवं स्थिति को वापस सामान्य बनाने में खर्च हो जाएंगे, तो सरकार रोजगार
कहाँ से प्रदान करेगी महोदय? और जब सड़क पर खड़े फल वालों से पहले उनके नाम पूछे जाएंगे और नाम अपना धर्म का न निकलने पर जब उपभोक्ता वापस मुड़ जाएंगे, तो इस देश का आम व्यापारी कैसे विकास करेगा महोदय? और इस देश के आम व्यापारी के विकास के बिना इस देश की अर्थव्यवस्था कभी विकास नहीं कर सकती है। इस देश के महत्वाकांक्षी ख्वाब हैं महोदय, जिनमें से एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का भी है। वही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी जड़ें इस देश की अनेकता अर्थात विभिन्नता अर्थात खूबसूरती में समाहित हैं। दूसरा, राजनीतिक विकास। महोदय, आप और मैं एक प्रजातंत्र का हिस्सा हैं और हर प्रजातंत्र की तरह इस प्रजातंत्र के भी अपने प्रत्येक नागरिक से कई वादे हैं, न्याय का, समानता का, भाईचारे का एवं आजादी का। और यदि इस प्रजातंत्र को विकास करना है तो ये अनिवार्य है कि अपने द्वारा किए गए वादों पर खरा उतरे। अन्यथा ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है महोदय, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा के चलते सर्वप्रथम लोगों ने वहां की राजनीतिक प्रणाली को नष्ट किया, तत्पश्चात एक सिविल युद्ध का रूप ले लिया एवं अंततः वहां पर अराजकता स्थापित हुई। मेरा तीसरा तर्क महोदय मुझे अंतरराष्ट्रीय पटल पर लेकर जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य से भी सांप्रदायिक सौहार्दहीन समाज एक अवांछनीय स्थिति है महोदय। एक ऐसा देश जहां धर्म के नाम पर हिंसा व अस्थिरता हो, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऐसे देश अलग कर दिए जाते हैं महोदय। और आज के जमाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना किसी भी देश के लिए अपनी संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करना संभव कैसे होगा? चौथा, There is problem, network problem. मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये दूसरे कंटेस्टेंट को बुला सकूं? if there is no response from her, then so just Randir ji, kindly just message to the girl कि network problem, so you are discontinuing but calling the another, क्योंकि उसको लगे नहीं कि हमें ये कर दिया गया। ठीक है? Okay. Just drop a message. Can kindly call the next. So we have with us as a next contestant, Kanix Dua from Motilal Nehru College. Yes, Kanix. Yes. Am I clearly visible and audible to everyone? Yes, you are audible. So first of all, warm greetings to all the jury members and all the people present here. First, I would like to wish everyone a very happy Republic Day. And before starting my today's stance of can India grow and progress without communal harmony, I would first like to ask everyone who is present here that can India even survive without communal harmony? The answer, according to me, would be a clear no. India is a country of multi-ethnic culture where people belonging to different religious, racial, cultural, and lingual identities live together harmoniously. However, in the present time, various untold incidents are affecting the communal harmony in different parts of the country. Communalism is the most serious threat to our sovereign, secular, socialist, and the democratic polity. The number of communal incidents is increasing day by day, which is not a good sign for our democracy. Harmony means joint. It simply means living with unity and beyond class, caste, creed, religion, and gender barriers. Communal harmony means that people of different religion, caste, creed, and sex, and different backgrounds live together in the society with love and peace amongst them. As there is a quote by Gandhiji, and I quote, as it is, the whole geographical India is one country. The whole people make one nation. Let us unite all races and religious communities together. We believe in one world family, spiritual community, and unitism. Our history is history of experiments and with truth through love and service of men. Start from smaller scale and move over to the bigger one.
The Constitution casts an important fundamental duty on its citizens. Article 51A of the Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst the people of India, transcending religious, linguistic, regional, and sectional diversities. The court has also played a great role to establish the faith of the people by upholding constitutionalism, the rule of the law, secularism, and the democratic values and the human rights. In any country, the rule of law can prevail only if the people and the institution respect and follows the laws. And there are several cases like the Indira Sahani and others versus the Union of India and others, or in the AIMS Students Union or the AIMS versus AIMS, the court has assured that the fraternity assuring the dignity of the individuals. So the Supreme Court today stands as the beacon of the truth and the hope for the citizens of the country. It reflected through the judicial decision delivered by the court time to time for promoting the harmony and the spirit of brotherhood amongst the people. In 1992, the National Foundation for Communal Harmony was set up under the Societies Registration Act 1816. The Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988 was enacted by the Parliament for maintaining the sanctity of the religious places and to prevent their misuse for political, criminal, subversive, and the communal purposes. I live in the national capital and I see communal rights very frequent, like the 1984 Sikh riots or the 2002 Gujarat riots or the recent riots after the ban over the burqa in the school and the colleges. The public transport are the targets of this type of riots. So my question is, who are the people who is going to benefit from these riots? The common people are the worst affected in these type of riots. It can be concluded that communal violence is one of the biggest problem in our country. Our country is facing today. The result of communal violence is the loss of private property in the form of household articles or the families, movables, and the loss of earnings by loss of lives of bread earners. Even communal peace and harmony gets completely settled after any communal violence. In this regard, police reform is necessary because after every communal right, questions have been raised whether our police is neutral or communal. Communalism is an obstacle in the development of the country. India has a legacy of unity and diversity which has to be maintained through the promotion of communal harmony. There is also an urgent need to strengthen the spirit and the spirit of nationalism among the citizens. Communities such as the Society for Communal Harmony have to be constituted to promote communal harmony among the members of the society. With this, I want to conclude my today's speech. Thank you everyone for having me today here. Thank you, Kanik. I see Aishwarya is back, so you might want her to conclude if she wants to. Yes, Aishwarya is there. Yes, Aishwarya, you have 2 minutes to conclude. जी मैं सदन की तरफ क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। मेरा सिर्फ अंतिम तर्क रह गया था। मैंने 4 तर्क अभी तक सदन पटल पर प्रस्तुत करे हैं महोदय। सबसे प्रथम वित्तीय था, उसके बाद मैंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करी, फिर मैंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करी। अंतिम जो मैं बोलते बोलते जब नेटवर्क इशू हो गया था तब मैं सामाजिक प्रगति की बात कर रही थी और मैं ये बता रही थी कि किस प्रकार एक समाज Every time she comes to society, she gets stuck. Poor thing. Oh, we can wait. Maybe we can proceed with somebody else, and then when she gets back, give her another chance. There is again network problem. Go ahead with others. Yes, Ranjana Vishnoi from Hindu College. Hello, I'm audible. Yes, you are audible, but you are not visible. Okay. Ranjana Vishnoi or
Divya Kataria. Yes. Yes. Yes, Now, Ranjana. Ranjana Bishnoi? Yes, yes. Okay. Shall I start? Yes, yes. Okay. नमस्कार सभी को, मेरा नाम रंजना बिश्नोई है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की हिंदू कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज के विषय, क्या भारत सांप्रदायिक सद्भावना के बिना विकास और प्रगति कर सकता है? इस पर मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति तथा उसका विकास सांप्रदायिक सद्भावना तथा शांति पर निर्भर है। इस तरह के समर्थन में वर्तमान संदर्भ में कई उत्तर मिल जाएंगे तथा यहाँ पर संप्रदाय का अर्थ है मार्ग, पंथ, रीति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ हुआ विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांति के साथ एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन आज संप्रदाय सब बदलकर सांप्रदायिकता का रूप धारण कर चुका है, जिसका तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। विषय में निहित विकास या प्रगति का अर्थ समझने के लिए यहाँ पर एकीकृत और समग्र प्रकृति को समझना होगा, जिसमें आध्यात्मिक और धर्म निरपेक्ष पहलू शामिल है तथा ये किसी देश में रह रहे व्यक्तियों को सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रगति को शामिल करता है। इसी प्रकार यह हम सहज रूप से जानते हैं, जो समाज जितना शांत होता है वह उतना ही समृद्ध होता है। इसका पता 2014 के एक अध्ययन से चलता है कि सामाजिक संघर्ष वाले देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक तकनीक, परिवहन, बाजार, व्यवसाय, वित्तीय बाजार और दक्षता में बहुत कमतर प्रदर्शन किया, जबकि उसके विपरीत जो सामाजिक संघर्ष में जो जिन्होंने कमी लाई उन्होंने उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। अगर आंतरिक संघर्ष की आर्थिक लागत को समझे तो पिछले एक दशक में ब्राजील ने हिंसा और अपराध के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 5% खो दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह तो सब जानते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना से हमारा देश उन्नति कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि और हमें यह समझना होगा कि सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित कैसे किया जाए तथा इसके लिए सबसे पहले हमें राष्ट्र के चरित्र को समझना होगा। हमारा राष्ट्र का चरित्र विविधता में एकता को दर्शाता है तथा राष्ट्र के चरित्र को समझे बिना राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं की जा सकती। और जब तक विभिन्न विश्वासों और दृष्टिकोणों की वैधता से आंतरिक रूप से विश्वास नहीं कर तब सांप्रदायिक इसी प्रकार सांप्रदायिक सद्भावना का केवल शैक्षणिक बहस का विषय बना के स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर हमें उसको वास्तव में स्थापित करना है तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, हमें उनको बताना होगा कि सद्भाव के अभाव में हमारी सारी ऊर्जा, पैसा और ध्यान तो या तो विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को बिगड़ने से रोकने के प्रयास में बर्बाद हो जाता है या अशांति की घटनाओं के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य करने में चला जाता है। इसी सद्भावना के महत्व को समझते हुए भारत में इसको स्थापित करने के लिए प्राचीन समय से प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें कबीर, स्वामी विवेकानंद, वर्तमान में अन्य लोग भी इस दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान संदर्भ में देखें तो सांप्रदायिक सद्भावना ही वो चीज है जो बड़े बड़े मुद्दों को समाधान कर सकती है तथा इसको स्थापित करके कश्मीर जैसी समस्या भी हल करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह, जिसे कौमी एकता सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है, वो हर साल 19 से 25 नवंबर के बीच मनाता है। 2016 में मनाया गया था तथा इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। लेकिन इस दिशा की ओर भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलकर कदम बढ़ाना होगा, तभी यह प्रयास अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐश्वर्या, अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो गया हो तो आप अपनी बात को 30 सेकंड में पूरा करें। हाँ जी, 30 सेकंड। धन्यवाद। मैं बात कर रही थी बौद्धिक विकास की, महोदय।
मैं बता रही थी कि किस प्रकार से एक परिप्रेक्ष्य में एक देश कई सारे व्यक्ति विशेष इकाइयों का समूह होता है। आश्रय ये कि देश की जो प्रगति है उसके लिए आवश्यक है व्यक्ति विशेष की बौद्धिक प्रगति, और व्यक्ति विशेष की बौद्धिक प्रगति के लिए आवश्यक है महोदय कि वह अपने ज्ञान मार्ग में अपने पूर्वाग्रहों को न आने दे। वही पूर्वाग्रह जो एक सांप्रदायिक सौहार्दहीन समाज में बालावस्था से लोगों को प्रचुर मात्रा में सिखा दिए जाते हैं। अतः इन दोनों में एक आंतरिक विरोधाभास है महोदय। मैंने इन 5 तर्कों के माध्यम से सदन पटल पर स्थापित किया है कि किस प्रकार ऐसे देश अथवा समाज जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की हीनता हो, उनकी प्रगति में कितनी बाधाएं आती हैं। बाधाएं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है उनके अस्तित्व पर, और बिना अस्तित्व के महोदय समाज प्रगति नहीं किया करते। धन्यवाद। धन्यवाद। लवपुरी फ्रॉम हिंदू कॉलेज। जी, सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम लवपुरी है। बुद्धिजीवियों के सदन का ये मत है कि भारत बिना सांप्रदायिक सौहार्द के प्रगति नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि अगर देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो यह प्रगति के मार्ग में एक अड़चन साबित होगा, क्योंकि भारत विभिन्न जाति व धर्मों का देश है, और यदि यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के मध्य हिंसा होती है तो इससे भारत का सकल घरेलू उत्पाद को क्षति पहुंचेगी। जैसा कि हम सब को मालूम है कि जब कहीं पर हिंसा होती है तो सबसे ज्यादा क्षति सार्वजनिक संपत्ति को होती है। तो इस संपत्ति को फिर से निर्माण करने के लिए करदाता की मेहनत की कमाई का उपयोग होगा, जो कि देश के विकास हेतु प्रयोग में लाया जा सकता था। सांप्रदायिक सौहार्द ना होने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि तो खराब होगी ही, निवेशक यहाँ पर अपना पैसा निवेश नहीं करेंगे, उद्योगपति अपने उद्योग को कहीं और लेकर जाना चाहेंगे, जिससे बाजार में पैसे की किल्लत आएगी और सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। इससे देश में गरीबी और बढ़ेगी। सांप्रदायिक सौहार्द होना कितना आवश्यक है, ये भारतीयों से ज्यादा भला कौन जान सकता है। कौन भूल सकता है 1947 का भारत पाक विभाजन, जिसमें भारत का अपना कितना बड़ा हिस्सा गवा दिया, और विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 20 लाख लोगों की जान भी चली गई। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है यूगोस्लाविया, जो कि 1990 के दशक में एक देश था। सांप्रदायिक सौहार्द ना होने के कारण आज वह देश 5 हिस्सों में बढ़ चुका है और कई हिस्सों में आज भी गृह युद्ध चल रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो सांप्रदायिक सौहार्द ना होने का नुकसान ये है कि सरकार अपना सारा ध्यान हिंसा को नियंत्रण में लाने में डाल देती है, तो इससे अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता है। अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो बच्चों के मानसिक विकास पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों व मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हिंसा, जब बच्चे ऐसी चीजों को महसूस करते हैं तो उनके दिमाग पर इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हम इससे इस सभी तर्कों से ये साबित होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी देश के आर्थिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अति आवश्यक है। अपितु इसके साथ बच्चों के, जो कि देश का भविष्य है, उनके विकास के लिए भी सांप्रदायिक सौहार्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद लवपुरी। आनंद राज फ्रॉम हिंदू कॉलेज। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी। सदन की गरिमा को मेरा नमन। आज सदन पटल पे विषय है कि क्या भारत सांप्रदायिक सद्भाव के बिना विकसित और प्रगति कर सकता है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। भारत सांप्रदायिक सौहार्द के बिना कभी प्रगति नहीं कर सकता। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं विभाजन के दौरान दी फैज अहमद फैज की एक नज्म की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो इंतजार था जिसका वे शहर तो नहीं, ये वे शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे, याद की मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि विभाजन के दौरान लोगों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई थी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो सभी धर्मों के लिए था, अखिल भारतीय संग्राम था। लेकिन
उसके बाद की भारत की स्थिति क्या होती है वो आज हम जानते हैं कि किस तरह के दंगे हो रहे। 2013 के मुजफ्फरनगर, 2020 के दिल्ली दंगे से इस बात की स्पष्टता मिलती है कि अभी सांप्रदायिक सौहार्द की कितनी आवश्यकताएं हैं। और विभाजन की कड़ी वो पहली कड़ी थी जिसके बाद हमें सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। भारत एक समधर्म समभाव वाले उद्देश्य को मानने वाला देश रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियों में कुछ एक तबकों द्वारा सांप्रदायिकता को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित विशेषता है और एक शाश्वत मूल्य रखता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाएं। कुछ एक आंकड़ों की बात करें तो 2014 के एक अध्ययन के हिसाब से सामाजिक संघर्ष में जिसकी कमी होती है वह देश शिक्षा, आधुनिक तकनीक, परिवहन, व्यवसाय आदि में तरक्की करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 163 देशों में 133वें नंबर पे आता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन के हिसाब से भारत में फर्में जो है अपनी स्थितियां नहीं स्थापित करना चाहती है। उनके हिसाब से 1190 बिलियन डॉलर रुपया सिर्फ भारत में हिंसा पे खर्च होती है। इन सब तर्कों के हिसाब से हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से सांप्रदायिकता हमें किस ओर लेके जा रही है। और किसी देश के विकास के लिए जो कि हमारा विषय है कि क्या भारत तरक्की कर सकता है, तो हम देखते हैं कि तरक्की के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत पहली आवश्यकता है। और इन चीजों को देखेंगे तो हमें लगता है कि दरार से भरा समाज हमें निवेशकों को उनकी अस्थिरता और लंबी अवधि के रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में चिंतित करता है। एक से अधिक निवेश फर्मों ने बढ़ते सामाजिक तनावों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है। देश की प्रगति की बात रहे तो हम सांप्रदायिक सद्भाव से ही बेहतर कल की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देश के भीतर ही कला का शिकार होंगे तो हम बाहरी दुनिया अर्थात विश्व में कैसे अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। हमें अपने देश के लोकतंत्र, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति समान रूप से कहे तो देश का विकास तभी होगा जब सभी धर्म, जाति, पंथ के लोग एकजुट हो और अपनी संस्कृति पर नाज करें। तत्काल समय में सरकार द्वारा उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे संस्थान जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव परिषद जैसे संस्थान स्थापित किए गए हैं, लेकिन लोगों को उनकी जानकारी तक नहीं है। इसलिए हमें सरकार से उम्मीद है कि वो आगे जाके इन संस्थानों को बेहतर स्तर पे लोगों तक पहुंचाए। और जो हम सांप्रदायिकता का सरकार सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती है वो वोट बैंक के तौर पे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि वोट बैंक की राजनीति से हम लोग निकले और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करें। सांप्रदायिक सद्भाव हमारे विरासत में है, क्योंकि गांधी, तिलक, जितने भी जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता एक देश के लिए बहुत बड़ी भूल है और आगे जाके हमें सांप्रदायिक सौहार्द को लेके क्या जाए। गोविंद वल्लभ पंत के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि हमारे संस्कृतियों का संश्लेषण चलता रहना चाहिए ताकि हमारे पास ऐसी अवस्था हो जिसमें all will live as brothers and enjoy the fruits of the sacrifice of those who gave their all for the advancement or achievement of this freedom, fully maintaining and observing and following the liberty, fraternity and equality। और मैं हम वाणी को विराम देना चाहूंगा ये बोल के कि हमारे देश में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने सांप्रदायिकता को खत्म करें और सांप्रदायिक सौहार्द की ओर बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद। आरोही भट्ट from Aryavat College. Good evening. Good evening. You are audible, but you are not visible. Yes, please start your presentation. Good evening. I am Arohi Bhatt of Aryavat College, University of Delhi. The topic given for the day is, can India grow and progress without communal? You'll have to speak louder. Come closer. Can't hear properly. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. These were the words of Mahatma Gandhi, the father of the nation who led our country through the struggle to gain independence. The word community means a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common. Being a part of a community gives us a sense of belongingness. It makes us feel as though we are part of something greater and or bigger than ourselves in this world. Harmony, on the other hand, is the state of peace, love, serenity, and the absence of conflict. When we think of India, our train of thought consists of variety of cultures, people of different backgrounds speaking various languages, and all these people together form our country. And so, our legal system and policies should also be all inclusive. Following this belief, Prime Minister Narendra Modi presented the Sabka Saath Sabka Vikas slogan.
where he urged the citizens to put aside our communal differences and work together for the betterment of our nation. The growth and progress of a country depends on the citizens of that country. However, in the present times, various untoward incidents are affecting the communal harmony in different parts of the country, as seen in the riots following this introduction of CAA and NRC in 2019, which led to the disruption of harmony amongst the people and the destruction to public and private property. Communalism is the most serious threat to our sovereign, socialist, secular, and democratic polity. The number of communal incidents is rising day by day, which is not a good sign for our democracy. The communal disharmonies cause rift in the multicultural and diverse society, which further leads to stagnation in growth and progress. Lastly, I would like to put forward that many of us would think that India's progress depends better on trade with other countries. But why would these other countries invest or engage in trade with us if they do not see a stable and unified nation set towards building a better tomorrow? Thus, to answer the question, can India grow and progress without communal harmony? No, it cannot. And I rest my speech. Thank you, Aruni. Rudraksh Bhatt from Ardhavat College. Yes, sir. Just a second. Is I visible? Yes, you are visible. Okay. Just a second. तो आप 3 2 1 की उल्टी गिनती के साथ मेरा टाइमर स्टार्ट करना। 3 2 1। सभी अधिनिर्णायक गणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुद्राक्ष वत्स है और सदन पटल पर रखे विषय के मैं पुरजोर विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि सांप्रदायिक सद्भावना का अर्थ क्या है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, वह है अनेकता में एकता। यदि इसी कथन के अनुसार हम अपना कार्य आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में आएगा ऐसे भी कई देश हैं जहां पे संप्रदाय, ज्यादातर लोगों का एक ही संप्रदाय है, किंतु फिर भी वहां पे हमें प्रोग्रेस या ग्रोथ अर्थात उन्नति या प्रगति नहीं दिखाई देती है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। यहाँ पे हमें साफ साफ ये बात दिखाई देती है कि यहाँ पे इनकी इकोनॉमी या इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। और वहीं दूसरी ओर भारत में भी ऐसी कई बार हुआ है जहां पे संप्रदाय की वजह से हमारे भारत को आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से या भारत की आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे गुजरात 2002, बाबरी मस्जिद 1992, कश्मीरी दंगे 1986। इन सब का वर्णन मुझसे पहले भी कई वक्ता आके कर चुके हैं, किंतु मैं यहाँ पे यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी देश की तुलना भारत से नहीं कर रहा हूं, अपितु मेरा यह एक प्रयास है जिससे मैं अपने अधिनिर्णायक गणों को यह समझा सकूं कि हमारा देश केवल सांप्रदायिक सद्भावना से ही उन्नति और प्रगति के मार्ग पर नहीं जाएगा। अब यदि भारत हो या किसी भी देश को, हम यहाँ पे भारत की बात करेंगे, तो यदि भारत को प्रगति या उन्नति के मार्ग पर आगे जाना है तो उसे केवल सांप्रदाय या किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए कार्य नहीं करना है या सांप्रदायिक सद्भावनाओं पे नहीं रहना है। उसे आर्थिक व्यवस्था भी चाहिए, उसे शिक्षा प्रणाली भी चाहिए, उसे एक अच्छा संस्था, एक अच्छा संविधान भी चाहिए। यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो इसके कई मापदंड होते हैं। जीडीपी उनमें से एक है। जीडीपी, आधार रूप संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी काफी सारे तरीके होते हैं। तो पहले हम जीडीपी की बात करेंगे। जीडीपी का अर्थ होता है एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश में घरेलू उत्पादन कितना हुआ है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसके पश्चात आधार रूप संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। इसके लिए हम लोग नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, राष्ट्रीय सड़क। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यातायात या ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके अंदर आयात और निर्यात अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी हमें बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें और देशों से जोड़ता है।
तत्पश्चात हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली की। शिक्षा प्रणाली एक ऐसी ताकत है जिससे एक बहुत बड़ा संगठन या एक बहुत बड़े संप्रदाय को हम लोगों को लड़ने से रोक सकते हैं। यदि हम बात करें कश्मीरी दंगों की या गुजरात राइट्स की या किसी भी प्रकार के दंगों की हम बात करें, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने दंगे किए। यदि हम बात करें राम मंदिर की, तो हाँ, राम मंदिर के दंगे हुए या गुजरात के दंगे हुए, ये सब एक बहुत बुरी चीजें थी जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत गंदा असर डाला है। किंतु हमें ये भी समझना होगा कि बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने इसका फायदा उठा पाए हैं, क्योंकि वह जानते थे कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो लोग कभी भी इतने शिक्षित नहीं हो पाएंगे कि वो एक अच्छे और बुरे में फर्क समझ पाए। मैं अपने इस बिंदु से ये स्थापित करना चाहूंगा कि हमें अपने भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो एक अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहिए। एक अच्छा अर्थव्यवस्था के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहिए। एक अच्छी अर्थव्यवस्था को मापदंड के लिए जीडीपी एक सहारा होता है, आधार रूप संरचना एक सहारा होता है, और आयात निर्यात एक आधार होता है। मुझसे पूर्व के वक्ता काफी बार ये कह के गए हैं कि हमारे देश में बाहरी देशों के लोग नहीं आएंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो भी इसका कारण ये होगा क्योंकि लोग आज भी यदि हम देखें तो देश जो भारत है, यहाँ पे लोग बहुत कम ही निवेश करते हैं, किंतु ज्यादातर लोग यहाँ पे वो हैं जो बिक्री के लिए आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रीज और देशों की कम लगी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर जो सामान बिक रहा है भारतीय जनमानस के बीच में, वो सारा बाहरी लोगों का ही है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, किंतु ये देश रहना चाहिए। और इस देश को बने रहने के लिए हमें आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ना कि सांप्रदायिक सौहार्द पे। धन्यवाद। ठीक। श्री पांडे फ्रॉम हिंदू कॉलेज। Am I visible and audible? Yes. हाँ भाई। Okay. So good evening, honorable jury members and all the audience. My name is Shreshi Pandey. I am from Hindu College. I would like to answer the question, can India grow and progress without communal harmony, in English? So I begin. First of all, communal. The word communal refers to involving different social or religious groups within a community. Harmony refers to a state of agreement or of peaceful coexistence together. Therefore, communal harmony is understood as binding together with one another in the context of communities of different thoughts and beliefs, be it social, economic, political, and ecological. It simply means living with unity and mutual reciprocity beyond class, caste, creed, religion, and gender basis. According to Dalai Lama, India is a model for religious harmony. He mentions that in the last 2000 to 3000 years, different religious traditions such as Jainism, Islam, Sikhism, and others have flourished. The whole concept of religious harmony is the most valuable treasure of our India. Communal harmony is paramount in any country that has multiple religions and communities. We must strive hard to train and educate people in harmonious cohabitation. As Gandhi ji rightly said, the whole geographical India is one country. The whole people make one nation. Let us unite all races and religious communities together. He believed in I and my, in a common Indian nationality and tolerance and acceptance of all religions within the Indian national framework. What are the provisions in the Constitution? The framers of the Indian Constitution emphasized the objective of fraternity in the preamble in order to ensure both the dignity of the individual and unity of the nation. The Constitution casts an important fundamental duty on its citizens in Part 4A. Article 51A, Part E of the Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religions, linguistic, regional, or sectional diversities. Democracy would indeed be hollow if it fails to generate this spirit of brotherhood among all sections of the people. A feeling of that all fellow citizens are children of same soil, same motherland. This spirit of brotherhood becomes all the more essential in a country like India, which is composed of so many races, religions, languages, and cultures. Now the question arises, why communal harmony? A house divided against itself cannot stand. This warning to India torn by internal war holds true
for the nation today and for the world itself. The ancient Indian scripture Rig Veda endeavors plurality of religious thought with its mention Ekam Sadvipra Bahuda Vadanti. Arthat, meaning wise people explain the same truth in different manners. The humanity that India represents today is a product of civilization 12,000 years old or more. The spirit of tolerance and assimilation are the hallmarks of this civilization. Communal violence is one of the biggest problems our India is facing today. The result of communal violence is the loss of private property in the form of household articles of families, movables, and loss of earning by loss of lives of bread earners. Even communal peace and harmony gets completely shattered after any communal violence. Therefore, communalism is an obstacle in the development of a country. India has a legacy of unity and diversity, which has to be maintained through the promotion of communal harmony. There is an urgent need to strengthen the spirit of nationalism amongst the citizens of the country and address the rising intolerance in the country for maintaining peace. It is necessary that at the village, block, taluk, municipal, and city level, social harmony committees should be set up to promote communal harmony amongst the members of the society. What is the impact of communal violence in a country? Violation of human rights, economic loss, social dissonance, and erosion of constitutional values. Communal violence strengthens both banks of ideologically aligned political parties and further disrupts the cohesiveness in society. It causes serious damage to communal harmony for a longer period of time. The surge of majoritarianism in India has been influencing the mindset of the people in big way, and this is indeed subject of concern. Coming back to the question, can India grow and progress without communal harmony? The answer is a big no. History is the proof that whenever our harmony has been attacked, we have lost it brutally. Be it 1857, be it the Round Table Conference in 1930, 1947, when the country suffered division that has been painful and replete with bloodshed. Even today, the disastrous consequences are being faced both by India and Pakistan. Gujarat riots of 2022 to 2020, when New Delhi witnessed one of the worst communal violence in the history of the national capital. Therefore, what type of progress are we talking about? Change is not progress, but progress requires change. Therefore, progress can be identified as an improvement in the well-being of human beings. India has always been identified itself as unified in diversity. Setting an example for the whole world, being a pluralist society, it has been home to a number of religious communities such as Hindus, Muslims, Sikhs, Buddhists, Zoroastrian, Christian, Jews, and so on. Be it the time of Samrat Ashok or Akbar, or even the struggle for independence, unity in diversity has always been a strength. Therefore, I would like to rest my case with a pledge to maintain our strength. Together we stand in harmony. Progressively we make our India blue. Thank you so much. Thank you. Now, Simran Suhar from Arjbhat College, Delhi. Sir, Atharv Tomar nahi hai? Yes, Atharv, you can also start. सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर 3, 2, 1 की गिनती पर मेरा समय शुरू कर दिया जाए। 3, 2, 1। नफरत की दीवार को गिराएंगे हम, धर्म की सही व्याख्या समझाएंगे हम, तुम्हारे षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होंगे, कट्टरता के जहर से खुद को बचाएंगे हम। सदन की गरिमा को नमस्कार। मैं अथर्व तोमर, हिंदू महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र, आज जो विषय रखा गया है उस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। विषय यह है कि क्या सांप्रदायिक सद्भाव के बगैर भारत उन्नति और प्रगति कर सकता है या नहीं, तो मेरा उत्तर है नहीं कर सकता। और अब मैं इसी अपने उत्तर को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। तो मान्यवर, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करना। सांप्रदायिकता का उदय राजनीति से ही हुआ है, इस पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है और भारत की जो पंथ निरपेक्षता वाली नीति है, हमें इसको बढ़ावा देना होगा। अगर आधुनिक भारत में इसके जन्म की बात करें तो इसके जो सांप्रदायिकता बीज है वो ब्रिटिशों द्वारा बोया गया। इसकी शुरुआत हम 1906 से मान सकते हैं, जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। 1940 के लाहौर अधिवेशन में तो हद ही कर दी गई, जिसमें दूसरे देश पाकिस्तान की मांग की गई। और इन सब चीजों का जो पूर्ण रूप में नतीजा आया वो 1947 का दर्दनाक विभाजन था, जिसने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश सांप्रदायिक आधार पर बना दिए। मान्यवर, सांप्रदायिक आधार पर बना दिए।
बीते 20-30 वर्षों की अगर चर्चा करें तो 1989 के भागलपुर दंगे, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, गुजरात दंगे और हाल ही में 2020 में हुए दिल्ली दंगे इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार सांप्रदायिकता समाज में जहर घोल देती है, समाज के लोगों की शांति को भंग कर देती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की अगर बात की जाए तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता और सभी धर्मों को एक समान मानने की थी। उन्होंने कहा था कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, सब धर्म तो एक है, इनमें अंतर क्या है? सब धर्म हमें प्यार करना सिखाते हैं, सब धर्म हमें सद्भाव रखना सिखाते हैं, तो इसलिए तो हमें सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और यह प्रश्न आता है कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो क्या होगा? यह प्रश्न, अगर इसका प्रश्न का उत्तर देना अगर मैं चाहूं तो सरल सा उसका उत्तर है कि भारत उत्थान और प्रगति नहीं कर पाएगा। और इस उत्थान और प्रगति के माने क्या है, इसके आयाम, इसको हम कई सारे आयामों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम आयाम होगा वैज्ञानिक आयाम। किसी देश की जो मजबूती है वो निर्भर करती है कि किस प्रकार से उसने अपने अनुसंधान और शोध पर प्रयास किया है, उस पर ध्यान दिया है। अगर हम अपने धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल को अपने वैज्ञानिक सोच के ऊपर रखेंगे तो हमारा समाज विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से तो भारत सारे धर्मों का सम्मान करता है, सारे धर्मों को एक समान मानता है। हमारा देश सांप्रदायिक आधार पर विकसित नहीं हुआ है। हमारे देश में सभी की भावना का सम्मान किया जाता है। दूसरा आधार आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय आयाम। जैसे हमारे पिछले वक्ता ने भी कहा कि अगर भारत में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता होगी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो जो विदेशी निवेश है उस पर प्रभाव पड़ेगा। विदेश हमारे जो भारत के बारे में जो धारणा है वो तो इसी माध्यम से बनाएंगे ना कि हमारे भारत का माहौल कैसा है, हमारे भारत में क्या लोग एक दूसरे की सहायता कर पा रहे हैं, क्या सरकारें अगर कोई भी घटना ऐसी होती है तो क्या उसको रोक पा रही है। इस पर हमारे विदेशी हमारे बारे में धारणा बनाते हैं और अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, दंगे हुए तो धारणा बहुत ही नकारात्मक साबित होगी। तीसरा होगा राजनीतिक आयाम। इसके लिए जो हमें लक्ष्य, जो हमें कार्य करना होगा वो हम जनता को ही करना होगा। हम जनता को ही, हमारे राजनेताओं को समझाना होगा कि नहीं, अगर तुम विकास की बात नहीं करते, अगर तुम रोजगार की बात नहीं करते, अगर तुम शिक्षा की बात नहीं करते, अगर तुम सुदृढ़ता की बात नहीं करते, तुम सशक्त करने की बात नहीं करते, तुम सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग कर हमें बांटना चाहते हो तो हम तुम्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें निर्वाचित नहीं करेंगे। इसका चौथा आयाम आ जाएगा सांस्कृतिक आयाम। अगर हमारे एक दूसरे पंथ, एक दूसरे धर्मों के बीच सौहार्द नहीं होगा तो क्या हम उनकी संस्कृति से सीख पाएंगे? हर धर्म में कुछ ना कुछ कई सारी अच्छाइयां होती हैं, कुछ ना कुछ नहीं कई सारी अच्छाइयां होती हैं, और अगर हमें उनसे एक दूसरे से सीखना है तो हमें एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना होगा। और अगर एक दूसरा समाज एक दूसरे की सहायता करेगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा, जिस विश्व गुरु बनने का सपना हम देखते हैं। और अगर सौहार्द ही नहीं होगा तो विश्व गुरु बनने की सपना तो एक कोरी कल्पना हो जाएगी। तो हमें यथार्थ जमीन पर इसका निराकरण, इसको लाना होगा। अंत में अगर मैं बात करूं तो इन सब बातों को देखने के बाद तो यही सिद्ध होता है कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो भारत किसी भी मायने में प्रगति नहीं कर पाएगा। और हमारे संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। आर्टिकल 15 की बात करें जो भेदभाव को खत्म करता है, या फिर आर्टिकल 25 से 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, ये सब जो आर्टिकल हमारे संविधान में क्या करते हैं, ये सब क्या बतलाते हैं? ये सब बतलाते हैं कि हमें एक दूसरे धर्म का सम्मान करना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है उसकी जाति धर्म के आधार पर, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। अंत में मैं अपनी वाणी को एक संस्कृत के प्यारे से श्लोक के साथ विराम देना चाहूंगा जो हमें उद्देश्य बताता है कि किस प्रकार से अगर हम चलें तो हमारा जो समाज होगा वो आगे बढ़ पाएगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ हमारे समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ना होगा अगर हमें भारत को एक उच्च स्थान पर ले जाना है और हमें भारत को इस काबिल बनाना है कि वो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, पूरी दुनिया को एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सिमरन सुहाग from Ajbat College. Sir, am I visible and audible? Yes, you are visible. Sir, I'd like to start with the self count of 3 to 1. 3, 2, 1, start.
There is no path to peace. Peace is the path. As rightly said by Mahatma Gandhi, good evening all, I am Simran and I believe that India cannot progress and grow without communal harmony. The humanity that India represents today is a product of civilization of 12,000 years, and the spirit of tolerance and assimilation are the hallmarks of this civilization. Never has the question have arrived in communal harmony and social integration has raised such a wide range of emotions as of today. Harmony means joint. It is understood as binding together and being in concord with one another, and in the context of communities that have different thoughts and belief, be it economic, political, social, or ecological, etc. It simply means living with unity and mutual reciprocity beyond any caste, class, creed, religion, and gender barriers. India is a country of multi-ethnic culture where people belonging from various religious, racial, cultural, and linguistic identities live together harmoniously. However, in the present times, various untoward incidents are affecting the communal harmony of our country in different parts of the society. Further, I've divided my content into three major parts. First, I'll be talking about the reasons that have led to this disharmony. Secondly, what are the consequences of this violence? And third, what can be the solution so that we can get a better analytical and comprehensive understanding regarding the whole topic. So first, I would like to start with the reasons. So first reason is vote bank politics. The politicians use the communal card in order to align themselves with one particular committee or in order to destroy the vote banks of any other party which often indulge in instigating a communal right. Secondly, the turf war for dominance by religious leaders. The religious leaders belonging from different religions and many a time sects from the same religion rage a so-called holy war in the name of protecting their religious practices. Third, the irresponsible reporting by the media. Many a times media broadcasts unconfirmed, sensitive, often biased reports on national television just to sensationalize the issue and in order to gain TRP. This often adds fuel to the fire and increases the animosity between two countries. Now, it was important for us to understand the reason, not only to understand that why this whole disharmony is being created, but also to understand that how it affects other aspect of the society that later become a hurdle in the growth and development of any other particular community, society, or a country. Now, moving on to the consequences of the communal violence. The greatest sufferers of communal violence are the innocent common people who get caught inseparably into circumstances beyond their control. Secondly, there is an avoidable loss of life and essential public property gets distorted. Thirdly, the anti-national elements get adequate opportunity to flag anti-national feelings and work on creating an atmosphere that break the cohesiveness of a society. Fourth one, the social fabric of a society gets distorted and the conditions of this mistrust serve as a catalyst for future conflicts. Now, moving on to the solution, I'll be providing three aspects to this. First one, we need to understand that whenever we talk about building a peaceful society, it is a slow process. It is a gradual process. Therefore, we need to have the patience and determination that can strive us to work towards the betterment of a society in a long run. Secondly, moving on to collective response. With collective response, what I mean to say is that neither the government alone nor the people alone can build a peaceful society. It will require a collective response from all the politicians, from the people, from the citizens, from the government, all together in order to build a harmonious and a peaceful society. Third and last is humanity. Today, I see humans, but there is no humanity. With this, I mean to say that there is one more religion above everything, that is of humanity. Panel, we need to understand, we must not forget that we rise by lifting others. Therefore, we need to have that faith in humanity, which will drive us humans towards creating a peaceful and a harmonious society. Now, no human being enjoys disharmony and violence, and communal harmony now is the fundamental need of any country's fabric. Now, not just about India, any other country with all this is going on within their territorial boundary cannot grow and progress. Considering the internal turmoil that it brings, considering the distortion that it brings to the society, not even a single country can think about progress and growth. At last, I would say that we, as an evolving society, especially the youth, need to unite together to fight the communal forces and rise above the pettiness for the sake of humanity and for the security of our great nation. Thank you. Thank you. Next, Manish Kumar Singh from Satyavati College. Hello, may I audible, sir? Yes, you are audible. सर 3-2-1 की उल्टी गिनती पर आप समय स्टार्ट कीजिएगा। 3-2-1 ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा साधुवाद।
मैं सत्यवती महाविद्यालय से मनीष कुमार सिंह दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने वक्तव्य को रखता हूँ। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव इस देश की उन्नति के लिए उतना ही जरूरी है जितना इस देश को चलाने के लिए संविधान। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह देशवासियों के बीच शांति, भाईचारा और सहिष्णुता का समर्थन करके समुदायों के बीच सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव देश के अंदर स्थिरता का वातावरण पैदा करता है और इस स्थिरता के वातावरण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्र के प्रति वफादारी और बंधुत्व के भावना को बढ़ावा देता है। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव देश को एक इकाई के रूप में एकजुट कर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्तिशाली बनाता है। यह बहुत हद तक हमारे विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव देश में आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों में सरकारी संसाधन बड़े पैमाने पर नष्ट होते हैं। सरकारी संसाधन यानी जनता के संसाधन, जो जनता के दिए गए टैक्स से होते हैं। इन दंगों में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होती है, जिसका बुरा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापार वार्ताओं में हमारे देश को झेलना पड़ता है। महोदय, हमारे देश को विविधताओं का भी देश कहा जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और न जाने कई प्रकार के धर्म है और उन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ। यदि इतनी विविधताओं के उपरांत हम देश के अंदर एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर नहीं रखेंगे तो न जाने यह देश कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। महोदय, हमें और देशवासियों को यह बात समझना होगा कि इस देश के प्रगति और उन्नति में जितना योगदान एक हिंदू वैज्ञानिक वेंकट रमन राधा कृष्णन का है, उतना ही योगदान एक पारसी वैज्ञानिक होमी जे भाभा का है, उतना ही योगदान एक मुस्लिम वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का है और उतना ही योगदान एक जैन वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का है, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को बांट लेंगे तो प्रगति के मार्ग पर दौड़ना तो दूर, सही से चल भी नहीं पाएंगे। महोदय, मैं आज यहाँ एक आम आदमी के मन की बात भी रखना चाहूंगा। एक आम आदमी शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता है। महोदय, वह चाहता है कि उसके पास करने के लिए कुछ काम हो जिससे वह जीवन यापन करने के लिए पैसे कमा सके। वह चाहता है कि उसका परिवार सुख शांति से रहे, उसके बच्चों के हाथों में कलम और किताब हो और उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। वह चाहता है कि उसकी उन्नति हो, उसके देश की उन्नति हो। कोई खून खराबा नहीं चाहता महोदय, कोई अशांति नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों के हाथों से कागज कलम के बजाय तलवार और भाले हों और वह एक दूसरे को मारे काटे। मगर फिर वह कौन से लोग हैं जो समाज में, देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, जो देश में सांप्रदायिक दंगों को फैलाते हैं। महोदय, आज मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कुछ लोग हैं जो धर्म समुदाय के आड़ में अपने फायदे के लिए लोगों के दिलों में नफरत का बीज बोते हैं, उन्हें एक दूसरे से नफरत करने को प्रेरित करते हैं। वह बांटो और राज करो सिद्धांत पर अपने दाव पेच खेलते हैं। मगर हमें यह समझना होगा कि अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें पहले एक दूसरे से प्रेम करना सीखना होगा। हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। देश की उन्नति और प्रगति को बढ़ाने के लिए हमें एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि सांप्रदायिक दंगों में केवल एक धर्म विशेष व्यक्तियों की हत्या नहीं होती है, उस वक्त मानवता की हत्या होती है। उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की हत्या होती है। उस वक्त सैकड़ों सैनिकों की शहादत की हत्या होती है जो इस देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। महोदय, मैं देश के तंत्र से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिकी विद्यालयों में बच्चों को आपस में प्रेम और भाईचारा रखना सिखाया जाए। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग राजनीतिक मंच या धार्मिक मंचों से भड़काऊ भाषण देकर समाज में नफरत फैलाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अंत में अपने वक्तव्य को खत्म करूं उससे पहले कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है। कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है। मुझ पर बरसती है मेहरबानियां क्योंकि अल्लाह भी मेरा है और भगवान भी मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मिस्टर नीरज कुमार प्रजापति फ्रॉम तिलकधारी पीजी कॉलेज, जौनपुर, यूपी। नीरज जी, आप हैं? He's taking some time. So Divya from Ramjas College. Yes, Divya. Oh, you are not audible.
are not audible, please exit and join again. Am I audible, sir? Yes, now you are audible. My name is Divya and I'm from Ramjas College, Delhi University. Before starting, I would like to start with the quote. When I see by my eyes, all are different. When I see by my heart, all are similar. Today, the topic of discussion is, can India grow and progress without communal harmony? No. According to me, neither India nor any country grow without communal harmony. There should be peace and harmony in country to grow. As India is known for its secular ways, India is a land of diverse religions. It has always set an example of unity in diversity. India is multi-religious and multilingual land. State does not have any official religion. People have freedom to choose any religion or change whenever they want. But we all know huge gap between the letter of law and its application. Today, the people are taking unity in diversity for granted, due to which communal conflicts hinder economic growth. Frequent sectarian violence cast a poll over the country. According to various media reports, as social tensions rise in India, it loses its attractiveness to global investors. Leading asset managers point to the pivot in policy, the rise in sectarian violence and instability as the key drivers for restricting foreign investors in India. In an article in Bloomberg, Elisa, senior fellow for India, Pakistan, and South Asia at the Council of Foreign Relations, quoted by saying in that India remained too fractured and unable to rise above domestic cleavages. People do worry about social instability and its significant cost. Another example of the impact of conflict on the economy is how cow vigilantism has devastated the leather industry. Our PM, Mr. Narendra Modi, came up with an idea of Make in India project in which the main focus is to provide jobs to the weaker section, out of which 30% are women. But due to rise in cow vigilantism, there is a 5 to 6% decline in domestic supply following the reduction of cattle slaughter in the country, whereas there is a 3% increase in the leather industry by China. Another example I would like to state from 2015 Delhi, there's a case in which a Movo villagers attacked the home of 52-year-old Mohabbat, killing him for suspicion of slaughtering a cow. If these group of people are much considered about the slaughtering of a cow, then why don't they provide with the land development and provide with the vegetation so that the number of cattle roaming here and there on road would be died because of the accident, injury, and other diseases. Another factor that affect here is media. Earlier, we were taught that the media will provide of the all over the news, but now we are lacking and making our child to stay away from the media because they are too biased and just only letting us know and giving us the knowledge about the conflict of the different and telling us only about the difference between the Hindu and Muslims. Today, I would only like to conclude by, if India wants to emerge in a financially strong position in the post-COVID-19 world, we will need to work together without allowing religious divisions and conflict to distract. The drafter of the constitution saw India's religious diversity as a strength and an integral part of the ethos of India. S. Radhakrishnan, later the President of India, noted that India is a symphony where there are, as in orchestra, different instruments, each with its particular sonority, each with its special sound, all combining to interpret one particular score. It is this kind of combination that the country has stood for. India's economic future depends on it. We literally cannot afford it. Thank you so much. Thank you, Divya. I think we are done with all presentation. So any contestants whose name is not called? So now it's time to hear some deep thoughts from our respected judges. So I would like to invite
can we have a meeting tomorrow sometime, because I have to go, and we can compare, the judges can compare their notes and come up and give you a recommendation. You can tell the people. Sure. Tomorrow, just fix a time for tomorrow, something, a Zoom call for 15-20 minutes. I'm Yes, sorry, of course. it's already 6:10, so I'm running late. Okay. Dr. Shashi? Okay, if Rao Sahib is going, so we'll decide the, result tomorrow. Yes. In the morning, it's possible, because again, we have to go to Loni for Yes. the, Harmony journey, or, okay.